So let's start. Now we are going to start a new chapter. Before starting the chapter, we are going to page number 9. We are going to just revise one thing that you already know. We are doing, we are doing a connect activity on the page number 9 given of your textbook. So you have to tell me which task you are performing using the internet. आप इंटरनेट का यूज कहाँ पे करते हो, किस लिए करते हो, क्यों करते हो? Okay, so tell me students, why are you using the internet? Which task you are performing using internet? आपको जो पता हो, it's not necessary that you have to tell me the answer from the book. You can tell me your own uses of internet. Why are you using internet? Yes, very good. Then, then, anyone else? Okay, yes, very good. If you don't know about the word, particular word, okay, please, I am requesting to student, please talk, speak one by one. अगर कोई बोल रहा है तो अपने आप को म्यूट रखो, उसको खत्म होने पे आप बोलो. Okay, anyone else? We already learned the basic thing on the internet on the previous year, class 3. क्लास 3 में ऑलरेडी हमने इंटरनेट के बारे में कुछ चीज़ें सीख ली है. तो अगर आपको वो याद है तो वो आप मुझे बताओगे. What is the biggest use of internet? That is okay. Just just listen. If you are not on previous year, just listen it. That is only the basic thing that you already know. आपको पता ही है और उसमें से कुछ टॉपिक वापस यहाँ पे रिपीट भी हो रहा है. अगर आप क्लास 3 में नहीं थे that you don't have to be worried for that. Yes, please tell me other uses of internet. Can you do the shopping uses using of internet? Huh? Can you do shopping using of internet? Yes, we can listen the music, we can watch the movies, videos. Even if you want to search anything, you can use the internet. Now, uh, that is availability of book the tickets of for the bus, railway, even for the movies also in the theater. Also you can also use internet. Now listen to me. Just mute yourself and listen to me. So these are the many more uses of internet. If you want to talk with your friend who is not in your country, who is in another country, you can use the internet and talk with him, communicate with him. Even you can do the video chat, simple text messages, simple chatting, everything you can do using of internet. Nowadays you can also listen music using of the internet. YouTube is the most famous application that is used to watch the videos. Now it's also developed the music also, YouTube music also, that is used for the listen the music. So now what is the task of your, whatever you know, the task that you perform using the internet, आप क्या करते हो? अभी आप सबसे बड़ा यूज कौन सा करते हो इंटरनेट का? टेल मी.
nowadays. Yes, yes. We are using the nowadays every student who are listen. Okay, okay, mute yourself and listen to me. Nowadays, you know that that is a pandemic situation. Due to that, all the students using the internet to learn something for the education. So first use will be you have to be write down in the textbook. Whatever you are using for the communicating, you are using for the watching movie, you are using for the listening music, everything you have to be written here. In the connect activity, what is the task of your, you have to be write down the task that you perform using internet. Now, students, tell me that we are today connect with the Zoom meeting, right? How can you connect on the Zoom meeting? आप कैसे Zoom meeting में connect हुए? With use of the internet. How can you access the internet? आपने कैसे एक्सेस किया इंटरनेट को? इंटरनेट ऑन ही रहता है आपके पास कि उसको ऑन करना पड़ा? जैसे अभी आप मोबाइल फोन में, नाउ लिसन टू मी, म्यूट योरसेल्फ, प्लीज म्यूट योरसेल्फ, देन माय वॉइस विल बी क्लियर टू यू. अगर आप बोल रहे हो उसके बाद तुरंत अपने आप को म्यूट कर दो तो मेरी आवाज आपको क्लियर आएगी. ठीक है? अभी आप मोबाइल फोन या लैपटॉप डिवाइस इज योर्स, प्लीज म्यूट योरसेल्फ. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर यू डूइंग? आपने क्या किया इंटरनेट को ऑन करने के लिए? आई एम शोइंग टू यू. You are just, if you are using mobile phone, you can see here. You firstly open on the internet connection. This is the data symbol. You can see the name is also written mobile data. That is the internet. In the mobile language, it is called the mobile data. Even whenever you are connect with your laptop or PC, you are also using the Wi-Fi network, or the you can use the dongle also to connect the laptop or computer with internet. Now tell me students, you turning on the mobile data, how can you turn on the mobile? आपने जैसे मोबाइल डेटा पे क्लिक किया तो आपका इंटरनेट कनेक्शन तो ऑन हो गया. आपको कैसे पता चला कि मोबाइल का इंटरनेट कनेक्शन ऑन हो गया? Anyone knows what is the requirement for the internet? आपको इंटरनेट का यूज करने के लिए क्या चाहिए? आपको इंटरनेट यूज करना है तो आप क्या करोगे? You want to use internet, what should you have to do? Okay, you want to watch videos on the YouTube, what should you have to do first? Tell me students, what should you need first if you want to watch videos on the YouTube? अगर आपको YouTube पे वीडियोस देखने हैं तो आप क्या करोगे? Yes, we are firstly on the data. In the mobile data means a internet connection, but there is a one validity, means there is a one package for on the mobile data. पैकेज भी होता है मोबाइल डेटा में, राइट? अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन फ्री नहीं है, यू पे ऑन द फॉर द इंटरनेट, देन यू आर अलाउड टू यूज द इंटरनेट. जैसे पैकेज आते हैं 399, 499, 599, ऐसे पैकेजेस आते हैं. उनके लिए पर्टिकुलर कार्ड्स का हम यूज़ करते हैं. जैसे आपके फ़ोन में वोडाफोन का कार्ड होगा, एयरटेल, BSNL, MTNL, दिस आर जियो, दिस आर द एग्जाम्पल ऑफ कार्ड
If you have a card, then you are allowed to pay for the internet and you are access the internet if you pay for that. So this is the what is the basic requirement of internet. You can see basic requirement of internet is ISPS, means internet service provider. जैसे आप different cards का use करते हो, that different cards are called the ISPS. Remember student, this is the इंटरनेट चैप्टर, ये पूरा इंटरनेट पे है चैप्टर, तो इसमें बहुत सारे शॉर्ट फॉर्म्स आएंगे, तो आपको याद रखने हैं सारे शॉर्ट फॉर्म्स। एग्जाम में आपको एक शॉर्ट फॉर्म तो पूछेगा ही। ISPS, what is the ISPS? Internet Service Provider. Examples of ISPs: Jio, Airtel, Idea, Docomo, Vodafone, BSNL. These are the ISPs. If you want to use internet connection, अगर आपको इंटरनेट यूज करना है तो आपके पास कंपलसरी कार्ड्स होने चाहिए। अगर आपके पास कार्ड नहीं है, यू आर नॉट अलाउड टू यूज इट। आप लैपटॉप कंप्यूटर में भी कनेक्ट कर रहे हो वाईफाई, अपने मोबाइल फ़ोन में पहले डेटा ऑन करोगे फिर ही आप कनेक्ट कर पाओगे। इफ़ यू डोंट हैव एनी कार्ड, यू आर नॉट अलाउड टू यूज इट। So remember first, what is the ISPS? ISPS is used to give the service on the internet. So the name is the internet service provider. नेम से ही आपको पता चल जाएगा कि उसका मीनिंग क्या होता है। Examples: Jio, Airtel, Idea, Docomo, Vodafone and the BSNL. But you cannot use only the ISPs. डायरेक्टली कंपनी में से आपको इंटरनेट प्रोवाइड नहीं होता है, बीच में डेटा सिग्नल्स होते हैं। आप देखते हो कि अगर आप बीच में जाते हो तो वायर टावर्स आते हैं जिसका यूज करके आपको सिग्नल प्रोवाइड होता है। फॉर दैट सिग्नल वी हैव टू बी यूज द मॉडेम. What is the use of modem? It is used to connect the computer to the internet. ISPs क्या करते हैं? आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करते हैं, बट वो आपको ऐसा नहीं बोलते कि चलो मेरा कार्ड आपने रखा है अपने मोबाइल फ़ोन में, अपने डिवाइस में, तो मैं आपको इंटर कैसे कनेक्ट करना है वो मैं बताऊं। उसके लिए आपको मॉडेम की भी ज़रूरत रहती है। ISPs is only used for to provide the internet connection, but modem is used to connect the how to connect the internet to the device to the computer. So both things are the most important for the internet connection, for the use of the internet connection. Modem's full form is the modulator or demodulator, और आपको ऐसे ही बोलना है। मॉडेम मीन्स मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर. इट इज यूज टू रिसीव द डेटा फ्रॉम इंटरनेट and send data to the computer to the internet, right? And the modem is usually provided by ISPs. Remember, if in the exam ask which are the basic requirements of internet connection, ISPs and modems are the basic requirement for the internet connection. These are the image of the internet connection. So this is the tower of the ISPs. जैसे कि जियो का टावर है, एयरटेल का टावर है, उसमें से कनेक्शन सबसे पहले पास होगा मॉडेम में, then modem transfer the data to the computer, then we are allowed to use the internet connection. This is the basic requirement for internet connection. हमें क्या लगता है, हम इंटरनेट कनेक्शन ऑन करते, डेटा ऑन करते हैं तो हम यूज़ कर पाते हैं, लेकिन ये पूरी प्रोसेस है जिसकी वजह से आप इंटरनेट का यूज़ कर पा रहे हो. दिस इज़ द प्रोसेस using of which you are using the internet connection, right? Next topic: components of World Wide Web. Previously we are learning of one topic, the World Wide Web. Anyone remember what is the definition of World Wide Web?
What is the definition of www? Why you are using that? Web. I'm not asking the full form, I am asking the use of www. Whenever you are searching any website, firstly you are writing the www. Then write down the website name. Please mute yourself. Okay. So we are repeating the www. It's a one of what is the firstly full form? World Wide Web is the huge pool of information stored in the different computers around the world. You can access any of the information using the www. What is the www? Can be contained. It store the many information using the world. ऑन द वर्ड यू कैन एक्सेस एनी इंफॉर्मेशन जैसे आपको कुछ भी सर्च करना हो if you want to search about the between us, so what should you firstly write? www.betweenus.in. So it will be give the details about the between us. One thing more, when it's not necessary that you are on the one place, you are using a one device. आप एक ही डिवाइस में सारी इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते. You can use a different device for the same website. So www is nothing, it's a used to store the huge information. Now we are going to learn the components of www that already we learned in the class 3, but just revise that thing. First component is the web page. What is the web page? It's an individual page of information on the www. It is called the web page. सिंपली जब आप कोई वेबसाइट सर्च करते हो उसमें पर्टिकुलर एक एक वर्ड के लिए जब आपको पूरी डिटेल मिलती है उसको हम वेब पेज बोलेंगे. एंड व्हाट इज द वेबसाइट? अ वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेज लिंक टू ईच अदर थ्रू द hyperlinks. Remember, both are the different things. Web page and the hyperlink both are the different things. Whenever you are writing some words and you got the suggestion in the many links, that is called the website. And whenever you click on the particular link and it's open the whole the detail about about the word, then it is called the web page. Let's see a demo for that. So firstly I'm writing here the www.google.com. Now I'm searching here something like animals. Whenever you search on the animals, you can see here the different links. Animals, the Natural Geographic kids, you can see here the images, you can see here the videos. Then another different links are there. This is called the website on the animal world. Whenever you click on the particular site, firstly I'm click on the animal National Geographic kids. Whenever you click on that and whenever and it's open up one page, that is called the web page. This is both things are different. What is the web page and what is the website? You have to be remember, both are the different things. Whenever you search on a particular things on the particular word and you see the suggestion, that time that all are the websites, and you click on the one link, that is called the web पेज. जब कोई पेज ओपन होता है, जैसे कि यहाँ पे आप मेमल्स फर्स्ट एग्जांपल देख रहे हो. Whenever you click on the mammals and it's opened another page, another web page, that is called the hyperlinks. And remember, it always highlighted text. This is called the hyperlinks. Hyperlinks may be on the text or image. So these are, you can see here, three topics we learned: website, web page, and hyperlink.
So what is the hyperlink? Web pages contain the highlight text or images that connected to the another page on the web, that is called the hyperlink. Whenever you are using a computer and you go to the hyperlink, it will be show the hand arrow. अगर आपको हैंड एरो दिख रहा है तो वो हाइपर लिंक है. अगर आप कोई टेक्स्ट पे जा रहे हो उस पे हैंड नहीं आ रहा है, दैट इज नॉट अ हाइपर लिंक. Right, whenever you click on the hyperlink it will be redirected to the another page. So web page, hyperlink, website. Now next is the home page. What is the home page? What is the home page? Whenever you open any website, the first page that you appear on the web browser, that is called the home page. जब आप कोई वेबसाइट ओपन करते हो आपको फर्स्ट पेज जो दिखेगा उसको हम बोलेंगे होम पेज. फॉर एग्जाम्पल, whenever I search on the animals and I firstly click on the animals and I can see this pages, that is called the home page of the animal geographic kids. जब आप एनिमल जियोग्राफिक किड्स सर्च करते हो फर्स्ट पेज जो ओपन होगा उसको हम बोलेंगे होम पेज. Whenever you click on the another one and it will be redirected to next one, that is called the web page. फर्स्ट पेज को हम बोलेंगे होम पेज. जब वो रिडायरेक्ट होकर दूसरा पेज ओपन करेगा तो उसको हम बोलेंगे वेब पेज. बोथ आर द डिफरेंट. रिमेंबर स्टूडेंट्स. नाउ नेक्स्ट थिंग that you already learned in the class 3, URL. Anyone remember what is the URL? What is the full form of URL? Uniform Resource Locator. Right. What is the meaning of Uniform Resource Locator? Yes. What is the वो 11-10 को होता है, मुझे मत बताओ. I have also class on 11-10. Okay. What is the URL? Whenever you are searching something ना, you are typing, जैसे अभी हमने सर्च किया animals, or you are searching the animal geographic code. Whenever you writing the particular website name, जैसे listen to me, listen to me. आप अपने आप को म्यूट ही नहीं रख रहे हो, कंटिन्यूअसली बोले ही जा रहे हो. What is the uniform resource locator? Whenever you are searching the particular website, जब आप कोई वेबसाइट सर्च करते हो जैसे कि बिटवीन अस, अगर हमने वो. Okay, so what is the URL whenever you're writing the particular website name? जैसे कि between us, you are writing www.betweenus.in. That name is called the URL Uniform Resource Locator. जब आप वेबसाइट का पूरा एड्रेस लिखते हो, नेम लिखते हो, उसको हम URL बोलेंगे. So every web page has a unique address called the Uniform Resource Locator or the web address. वेब एड्रेस बोलेंगे तब भी आपको यही लिखना है, यूआरएल बोलेंगे तब भी आपको यही ही लिखना है. सेम थिंग. एंड लास्ट कंपोनेंट HTML. How can we make a website? That thing we have to learn in the detail in the next classes. Just remember the word HTML. HTML means a hypertext markup language. Using of HTML we can create a websites. It is a universal language that is used to create a web page. अगर आप वेब पेज बना रहे हो, वेब पेज आपको दिख रहा है तो वो HTML का यूज करके बनाया हुआ है. राइट. आपको सिर्फ HTML याद रखना है, उसके डिटेल हम बाद में सीखेंगे.
Just for a now, you have to remember the word HTML. तो क्या पता नहीं चलता? HTML सीखना नहीं है, बस आपको ये वर्ड रिमेम्बर रखना है, आपको याद रखना है कि HTML आता है। इट्स अ वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ www, क्योंकि उसका डिटेल अभी नहीं आएगा, बाद में आएगा। तो आपको आपको इतना याद रखना है कि HTML का यूज हम किसके लिए करेंगे? वेबसाइट बनाने के लिए, वेब पेजेस बनाने के लिए। दैट्स इट। और ज्यादा याद नहीं रखना, उसका फुल फॉर्म याद रखना है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। And the last component of www is the web browser that you are using. A website can be accessed using an internet application called the web browser. Example: Firefox, Chrome, Explorer, Apple Safari, Opera Mini. These are the web browser. So components of World Wide Web www are web page, website, home page, uniform resource locator, hyperlink, HTML, and the web browser. These are the basic components of www वर्ल्ड वाइड वेब। उसमें बहुत सारे शॉर्ट फॉर्म भी आए हैं, तो वो भी आपको याद रखने हैं। आज हमने कितने शॉर्ट फॉर्म सीखे? फर्स्ट, ISP, म्यूट योरसेल्फ फर्स्ट, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। सेकंड, www, वर्ल्ड वाइड वेब। थर्ड, URL, uniform resource locator. And last, we learned the HTML, hypertext markup language. So today we are learning the four short forms, so you have to be remember, and components of www: web page, hyperlink, website, homepage, URL, HTML, and the web browser. Next time we'll learn the Google Chrome interface. How can you see the Google Chrome? उसके components कौन से होते हैं, कैसा वो दिखता है? Yes.